Hi, all of you. Good afternoon. Yes, I'm late by a few minutes. That's because I was addressing the other class. So, you ultimately will go and merge with the other batch, which is the mainstream batch. Okay, starting from December onwards. Okay, so I had to give them some assignment and then start off with you guys. So, welcome back again. Today is the second class. Yesterday we had one introduction session. Hi Kumar, Mohini, Lakshay, Ananya. We are starting off now. Okay. So, first tell me if you have any queries, any questions to clarify based on what I discussed yesterday. By the way, I'm told a couple of you are first timers today. Can you raise your hand? Online, offline? First class today? First class, okay. Online, anybody who didn't attend yesterday and today is the first class? So, I'll give you a brief on what we discussed. Anybody online? ठीक है, बता देना मुझे, ठीक है? So, any questions you want me to clarify? Yesterday I discussed 4-5 things. Okay. Number one, we had a quick introduction about us, my name, Shabbir. Okay, my background, what I am teaching, the institute itself. Second, we talked about what is geography, what is its scope, what is the nature of a subject that we have. Geography as the study of earth as the home of man. Geography as the study of earth in terms of converging whatever we have on earth. Earth has water, earth has air, earth has forest, earth has mineral, earth has oceans, rivers. Okay, the societies we live in, the agriculture we do, sab milakar, whatever we are doing as a part of our activities and how earth has become our home. So I mentioned a name, Eratosthenes, a Greek scholar who defined the subject geography, who coined the word geography. इन्होंने ये geography जो name है, he coined it. The geography is geo plus graphy. Graphy as in study, graphene as in study, geo as in earth. So this man said, geography is the study of earth as the home of man. This I discussed. Then I related this, why geography is very encompassing, because nature ही ऐसा है. And I said, let this be your strength. If you understand geography, you're covering 20-30% of every GS paper, even more for that matter. Paper 1 geography hai, paper 2 has demography, inequalities, IR, paper 3 has environment, disaster management, issues about economy. Almost 30, 40, 50% in some papers of GS is geography related. हम पढ़ाएंगे आपको क्लास में. And ethics. You use lot of case studies from geography. Okay. So, know the scope of geography. The third discussion we had is that geography essentially is two types. Geography is physical geography. Geography is human geography. Physical geography is the... ठीक है, बैठाओ. Geography, physical geography is about the natural world. It's about the natural forests, natural water, natural landscape, natural environment, natural atmosphere. The physical का होता meaning है whatever is natural, and the human aspect is whatever is man-made. Okay, so we have, and I gave you a schematic of the 7 broad themes of geography: physical geography, environment geography. We have your population geography, economic geography, planning, and so on. Okay? So I gave that to all of you. The fourth discussion we were having is, what is the process of study? So see, this I am stressing increasingly. If you ask me, as a teacher, as an institute, what is it that we are different? Okay, what is it where we are unique is the approach of study that we have. Okay, I always maintain this, that do not see your ability to qualify on the basis of course completion. Okay, you will qualify only if you develop yourself into a personality that is at the level of administration skills.
आपको एक बनना है, पर्सनैलिटी बनना है, and knowledge, current affairs. Is a reason why the UPSC demands for current affairs. It demands for opinion-based questions. It depends analytical approach in study. They put lot of pressure, and they want to see how you manage the pressure itself. The questions that we have, the topics that we have, demand lot of interlinkages. Okay, इसका एक डिजाइन है. So course completion आपने कर लिया, that is not the enough factor. In fact, all those who are in this ecosystem, all institutes will finish the course. All students ultimately will study the whole thing, but yet they can't qualify because some of the skills required here they have not developed. So I always insist on see the preparation as a part of a proper process. There are stages through which you go. There are stages through which you have to master. Okay, so in this stage based, I said you have to move from L1 type of preparation towards L2 preparation towards L3 preparation. L3 preparation is analytical skills, application skills. This is about your leadership visions, your bigger picture of development. Okay, most questions asked are at this level, and whereas L1 is straight questions, regular questions from the notes, not much thinking required. And I insisted on one aspect yesterday, that memorization is a very, very important skill. Anybody who says he can't memorize things, please rethink on your strategy. I have not seen people qualify without memorization skills. आपको याद करना सीखना पड़ेगा. All of us have it, it's just that some of us suppress it. Okay, हमें लगता है याद करना is a bad thing. Okay, analysis is a superior thing. Don't do that. ठीक है? Having said this, a very important thing I stressed on yesterday was your timelines. Okay, कब तक क्या खत्म हो जाना चाहिए? Okay, and I think I gave a good analysis here. You require about 1.5 years of preparation. So I am focusing, okay, 2025 for all of you. Okay, some of you have told me, sir, no, you are preparing for 24. I said, fine, that's entirely your choice, but you must learn to cope with this. हमारा course geography का खत्म होने के लिए I'll take month of May, June. I require 6 months plus or minus a few days to finish your course. So if you're dependent on this class to get you ready for 24, I have my serious doubts. And after 6 months, I require another 50 days more to do the answer writing, to do the analysis component also. The students ask me, sir, कि हमारे क्या foundation course में will we not have tests? This is one question people ask me. एक तो when you start preparation, all of you are full of energy. So test दे दो, मैंने सब लिख के खत्म कर देना है. But when the tests actually start, you all will disappear. Okay, all these years, this is the pattern. We are running a test program. The attendance is just 10%. सिर्फ 10% बच्चे हैं जो टेस्ट लिख रहे हैं, वो भी आधा अधूरा पढ़ के. So tests हैं या नहीं? I will say we have assignments. Okay, assignments which are like tests. Okay, so and then when we start your enrichment, this will have the exam level test. Exam level test may require a whole range of another skill. Okay, so you'll have this, but we'll go through a process on that. So I explained that process, कब तक क्या शुरू करना है. And one thing I insisted on, maybe about a week or so from now, I'll have a small workshop on your GS preparation also. Because I've realized that until your preparation converges, okay, your optional, current affairs, your GS, ये सब converge नहीं होगा, you always will have a problem of loose ends. ठीक है? So I'll talk about that afterwards. That was how I initiated it. So right now, starting today, 27th of October, say about December first week, this is your initiation class. Initiation classes
where I am focusing on maps. Maps, world map is not in a syllabus. They don't even ask questions in the optional paper. But without knowing maps, you cannot do geography properly. Okay? And I cannot teach these maps in 1 or 2 or 3 days. Plus, there's a lot of some basic concepts that you are supposed to know. Some topics of geomorphology, some topics of climatology, simple wind, simple air pressure, some landforms you should know, and those are not a part of your actual courses. Okay, but we are doing this. So this is the initiation process, and once this gets over, then we will start off with your proper syllabus. This starts from approximately the first week of December. So I believe all of you have that schedule with all of you. नहीं है तो ले लेना क्लास के बाद में, or will share it on the portal itself. See the schedule. I try to be with the schedule as much as possible. I'm not saying कि exactly वैसे ही follow होगा. There will be some plus minus depending on your pace, depending on what's coming up new. Like say last batch of initiation, we did not discuss much about Israel region. बताया था, but not much. But this time I'll want कि I'll do that a bit more detail. So depending upon what things are in news, what topics are in consideration, current affairs mein, I'll keep on modifying the content to suit the relevance of the examination. Okay? So we are starting off with the initiation. So we will have a map-based classes now. I request 3 things from all of you. Okay, देखो, the UPSC preparation is not a regular job. It is not a regular type of a career. It is a very different type of a life you're trying to enter. And in many ways, this career will open up some bit of your personality also. So see this as a beginning of a new life. And with this beginning of a new life, let your approach also be more sincere, more committed. Approach also be more involved, more engaged approach. Okay, so what I request from all of you is, please be a regular for the classes. Unless it's a matter of life and death, okay, extreme unavoidable circumstances, you can miss the class, but make sure you make up for it. But classes mein aap please regular ho jaye. 1, number 2, whatever is taught in the class, whether we dictate or not, it has to be in your class notes. You have to be very, very alert. This is not a school class nahi chal raha hai, where I'll dictate every word. You have to be alert. I'm speaking, you keep writing. I'm jotting, you keep writing. I'm drawing, you keep drawing. Okay, keep pace with us as we teach. Okay, so be involved. Okay, be active learner. Okay, be engaged with us. Not passive learning. Okay, and third, whatever we teach every day, go back and summarize that in less than 1 page. Okay, I will teach, yes Kumar, I'll come to that. It's too early for, pehle aap apna tarika nikalo. Okay, we call this as a synopsis making and summarization. Okay, this is a very popular word in the market now, and at the risk of sounding immodest, this idea was entirely my innovation. I was the first person to talk about this, okay, in the coaching industry. And that was way back in 2000, 2001 when I began, okay, the initial classes. Why? Because this has helped me in my preparation. And I have every batch of mine. You go to my any old student, he will tell you how, passionately I talk about this one. Okay, summarization is putting whatever you have learned in a day or from the book into a very condensed, tight format. Okay, that's the one class summary should not be more than 1 page is the general thumb rule I have. Okay, if I'm teaching for 2.5 hours, your summary should be within half a page, half or 3/4 of a page, which means the keywords, the most important ideas. Okay, put the ideas in a diagram, in a schematic. Okay, compress it. This is your actual learning. In the class conditions, what happens is when we teach, it's a very bad science
to study anything continuously for 2.5 hours. Okay, it's a bad way of studying. What you're doing is actually a very bad way of education. But then, okay, that's the only choice we have. So when we teach like this, what happens is sometimes you lose connect with us. You get distracted. होगा ऐसे. मैं तो बोल रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे होगे. It happens. Every 15-20 minutes, you will get distracted. Class space में, there are things you do not understand, but you are writing. It is taken for granted. होने वाला है definitely. Okay. So what the focus should be, whatever I teach, आपको समझ में आए नहीं आए, it must be in your class notes. Then you go back to your room and read again, study again. Trust me, you will understand. Okay. 9 out of 10 doubts get clarified if you read again. And when you write that again in a summary form, the doubts get removed. So this is a very, very important part of your study. I mean, if you are not doing this, my assessment is आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो. You're wasting your time then. ठीक है? So summary is a must do. Regular classes, be involved, ask your queries. Online guys, I listen to you. Okay, we'll clarify your doubts and your synopsis writing. These are 3 must to do. Okay, and then I'll tell you how ultimately you'll have some workbook sessions, some practice sessions, and so on. Arpit, which atlas to buy? Okay, either of that will do, no problem. You can buy Oxford Student Atlas or Oxford Atlas, whatever you are getting, no problem. Okay, couple of page ऊपर नीचे होगा. Okay, and buy 2 atlases. One is Orient Black Swan Atlas, and the second is Oxford Atlas. Whatever you get, buy it. No issues there. And buy Oxford का नया edition लेना. Last 2-3 साल वाला. There's one in the market which is about 7 or 8 years old edition. Don't buy that one. That had lot of mistakes. Last 2 years में Oxford has changed the entire format. It's now a very good atlas now. Take all of you. So we get started now. Let me. Okay, so I'll be meeting you beach mein. The next 20-25 days. Largely the classes are taken by 2 teachers. One is Apurv Sir. Introduce him to all of you. And another teacher is Dimple Madam. Okay, I'll come in more intensively once the proper syllabus starts. Okay, so this map work, initiation will be done by them. I'll be here, of course. Sir, please come. Okay, so Sir is here with us. Your class will start sharp at 12 o'clock. Okay, officially we'll end up at around 2 o'clock. But if you have some doubts, queries, or Sir wants to stretch maybe 15-20 minutes, be okay with it. Initially will be slow, but then we'll pick up pace. So we're starting with the map sessions. Let me introduce to all of you Apurv Sir. He has been in this teaching for almost 8 to 10 years now across different platforms. We have him as a part of geography team, both in the initiation class, even in the main foundation classes also. Okay, so he'll be there. Any doubts, reach out to him. Any other issues, reach out to us also. It'll take about 1 week to understand what we are doing, and then we are on. Right, sir? It's all yours. I've told them about the atlas. I've recommended Orient Black Swan and Oxford. If you have something else, you can tell them. I'll leave it to you, sir. Thank you. Thank you. My wishes to all of you. Okay, guys. Good afternoon. How are you doing today? देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत फ्रैंकली, सब लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक है? कहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो. सिर्फ मैं परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? मैं कहूंगा मन है पढ़ो, नहीं मन है मत पढ़ो, क्योंकि मन के बिना पढ़ोगे तो उसको पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? तो जब परेशान हो जाओ तो मुझसे बात कर लेना एक बार, ठीक है? मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिलासा दे दूंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता. That is the best that I can do. Okay. Okay, guys. So now we have to start with our today's discussion, and we will be starting with the mapping section. Okay. And आप लोग अपनी atlas लाए हो? Yes, no, can't say. Okay, good. So if you have brought your atlases, then that is superb. Okay. So now when we are talking about the maps in geography,
Guys, maps में we will be doing a continent wise analysis. आप लोगों को शायद एक schedule मिला होगा. You must have got a schedule. Okay, good. And in the continent wise analysis, our first continent that will be there will be नॉर्थ अमेरिका. वी विल बी स्टार्टिंग विद नॉर्थ अमेरिका. तो अभी नहीं, अभी रुक जाओ, जब मैं कहूं तब अपनी एटलस निकाल लेना, उसमें नॉर्थ अमेरिका का मैप जो है वो खोल लेना. ऑनलाइन पीपल, यू हैव आल्सो गॉट द शेड्यूल. एवरीबॉडी शेड्यूल मिल गया? ओके, गुड. ओके गाइस, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैप्स, मैप्स आर नोन एज की टू ज्योग्राफी. मैप्स को हम लोग की टू ज्योग्राफी कहते हैं. कल सर ने आप लोगों की ओरिएंटेशन ली होगी. सर must have taken your orientation yesterday and must have told you about geography, what geography is all about. So can somebody tell me why maps are known as key to geography? Why it is important to understand maps? Beta, if you have not got the schedule, please contact the Edukemy support. They will give you the schedule. Okay. Please message on the Telegram group. You will get the schedule. So why are maps known as the key to geography? Map is not a graph, beta. Graph is something else and map is something else. Okay, so you must have understood that geography is majorly about spatial analysis. What is spatial analysis? अरे कुछ बताया करो, मेरी क्लास में कुछ बोलना पड़ेगा, स्टैचू बन के नहीं बैठना यहाँ पे. बेटा ऐसे ही बोल ले, हाथ वाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay. What is spatial analysis? Anybody else? Aerial study of the surface of the earth. अच्छा, और कुछ? Study of various places. और कुछ? Easy terms में बताया करो. UPSC को easy चाहिए. Simplest of terms. How space is used for different purposes. Yes, this is good. Anything else? Spatial analysis is basically the answer to the question where. हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. What, when, who, where. इनमें से जो where क्वेश्चन होता है, उस where क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? Spatial analysis. Spatial analysis basically tells us what we call as locations. So जो बेसिक एस्पेक्ट होती है, वैसे तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती हैं स्पेशियल एनालिसिस की. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेशियल एनालिसिस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेशियल एनालिसिस इज स्पेशियल एनालिसिस टेल्स अस अबाउट द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटीज इन ज्योग्राफी, yesterday you must have also understood that geography is basically the study of land and people, right? So in geography, when we are talking about locations, we are basically talking about two types of entities in locations. One is what we call as geographical entities, and the other one is what we call as human entities. So basically we can you can say summarize it in this manner. I'll return to this slide. Spatial analysis which is the core of geography deals with locations of geographical as well as human entities. So this is what स्पेशियल एनालिसिस गाइस इज ऑल अबाउट. तो हम बेसिकली स्पेशियल एनालिसिस में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एंटिटीज कहां पर हैं और ह्यूमन एंटिटीज कहां पर हैं. एंड व्हाट इज अ मैप?
A map is a visual representation of spatial analysis. तो जब हम लोकेशंस को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग मैप. So when we are talking about a map, see, nobody will ask you a definition of map ever, but still if you want to know the definition of a map is the visual representation ऑफ ना. ये वाली बात याद रखना हमेशा, जब आप किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस? द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट. सो इन अ डेफिनेशन यू विल नेवर यूज एनी अदर टेक्निकल टर्म, क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन में स्पेशियल एनालिसिस यूज कर देते हैं तो जिसको स्पेशियल एनालिसिस के बारे में ही नहीं पता है वो मैप की डेफिनेशन नहीं समझ पाएगा ना. So in a definition is the simplest statement that we give for a term. Never use any other technical term. फिर तो आप क्या कर रहे हो? फिर तो आप synonyms antonyms खेल रहे हो. जैसे अभी यहां पर किसी ने कहा था कि spatial analysis is about areal differentiation. ऐसा कुछ किसी ने बोला था. अब अगर बेटा मुझे areal differentiation ही नहीं पता है तो मुझे spatial analysis कैसे पता लगेगा? वो तो synonyms हो गए ना, पर्यायवाची शब्द थोड़ी खेल रहे हैं. So never use a technical term in any definition. So we will write it completely. Map is the visual representation of locations of geographical and human entities on the Earth's surface. So on the Earth's surface, when we are talking about the visual representation of the locations of geographical and human entities, that visual representation is given by the map. So now guys, अब यहां पर बार बार हमारे पास दो terms आ रहे हैं. We are getting two terms continuously over here. Which are those two terms? The first term is geographical entities and the second term is human entity. Now, what are geographical entities and what are human entities? Can anybody tell me? Yes, makes sense. Physical and political. So, when we're talking about geographical entities are the entities that have been given to us by nature. What are these entities that have been given to us by nature? These entities that have been given to us by nature are entities like landforms. What are landforms? Mountains, plateaus, plains, etc. जिसके बारे में आप लोग कहां पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे. Then guys, when we are talking about geographical entities apart from landforms are also rivers and other water bodies. Yes, minerals also, absolutely. So basically, when we are talking about geographical entities, we are majorly talking about landforms, rivers, and other water bodies. The visual representation of all these geographical entities is given to us in a map which is called as the physical map. तो फिजिकल मैप आपको किस चीज का रिप्रेजेंटेशन देता है? फिजिकल मैप गिव्स अस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. बेटा बेसिकली क्लाइमेट इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्लाइमेट इज जनरली स्टडीड सेपरेटली. हम लोग क्लाइमेट को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं. आई विल टेल इट टू यू अबाउट इट लेटर. Now guys, when we are talking about human entities, in human entities, we are basically talking about human settlements. हम human settlements के बारे में बात करते हैं. What are human settlements? Human settlements are geographically defined regions like cities, states, countries, etc.
So only the size grows. So we have a city, a human settlement larger than a city which comprises of many cities is a state. A human settlement comprising of many states is a country, so on and so forth. And these human settlements are studied in the map that we call as the political map. अच्छा, ये दिख नहीं रहा आपको? अच्छा अच्छा, अब तो और भी नहीं दिखेगा वैसे, ये नीचे जाएगा एक्चुअली में, तो मैं कल इसे नीचे करवा दूंगा, मैं अभी उधर नहीं लिखूंगा, ठीक है? So when we are talking about human settlements are cities, states and countries, and the study of human settlements is done in a political map. So when we are talking about maps, when we are basically talking about maps, in maps we have two major types of maps. We first have the physical maps, and then we have the political maps, where physical maps tell us about landforms and water bodies, and political maps tell us about human settlements. This is the first thing that we need to understand when we are talking about maps. तो अभी तक हम लोगों को तीन चीजें समझनी है. First, when we are talking about geography, geography is about spatial analysis. What is spatial analysis? Spatial analysis is the description of locations. The question is where, and the answer is spatial analysis. Now, when we are talking about locations, we generally talk about two types of locations: locations of geographical entities, locations of human entities. Now guys, these locations are visually represented on diagrams that we call as maps. Now principally there are two types of maps, or majorly primarily there are two types of maps. We have the physical maps and we have the political maps. Now there are one more type of maps about which you need to know, which are known as thematic maps. If you will open your atlas and you will take out any continent, निकालिए please North America. एटलस ऑक्सफोर्ड की लेना, अच्छा है. ओरिएंट ब्लैक स्वान ली है, वो भी ठीक है. Okay, so on one page you can see the physical map, and on the other page you can see the political map. In the political map you can majorly see the countries, right? The right hand side one is the political, you can see the countries in that. In the physical, majorly you can see the altitude. देखो फिजिकल में ना आपको मेजरली तीन कलर्स दिखाई देंगे, एक ब्राउन दिखाई देगा, एक येलो दिखाई देगा, एक ग्रीन दिखाई देगा, राइट? ग्रीन वन आर दी प्लेन्स, येलो वंस आर मेजरली दी प्लेटोज, and the brown ones are the mountains. So brown is the highest and green is the lowest altitude. ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, हर एटलस में ऐसे ही दिखाई देगा आपको. अब नेक्स्ट पेज पे आइए, अब आपको कुछ और मैप्स दिखाई देंगे, दिख रहे हैं? Now these maps that we have are the thematic maps. Now when we are talking about thematic maps, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी देख रहे हो, एटलस देख रहे हो? Seeing your atlas? Okay, good, good, good. हाँ ठीक है, एक ने यस कर दिया, मेरे को समझ में आ गया, सब लोग देख रहे हैं. Good. Okay guys, now when we talk about thematic maps tell us about the added characteristics of the region. So there are certain added characteristics apart from the geographical and the human entities. These added characteristics are told to us by the thematic maps.
Now, when we talk about these added characteristics that are told to us by the thematic maps, there are majorly 4 characteristics that are primarily represented by thematic maps. Look in your atlas. One thing that you will see will be related to population distribution. Can you see the population distribution map of North America in your thematic maps? उसमें जनरली आपका शायद रेड कलर यूज किया होगा या कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. जहां पर कलर डार्कर है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है और जहां पर कलर लाइटर है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी लोअर है. So your first thematic map will tell you about the distribution of population. Population is possibly the most important human entity about which we talk in geography. After this, another thing that is represented by the thematic map are the mineral resources. अभी कोई कह भी रहा था minerals के बारे में. So when we talk about the mineral resources are very important for the development of the region. The development largely depends upon mineral resources. और क्योंकि हम ज्योग्राफी में किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं, इसलिए गाइस हमें मिनरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम मिनरल रिसोर्सेज we also have maps related to agricultural patterns. एक आपको ना एग्रीकल्चर का भी मैप दिखेगा उसमें. बेसिकली जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स का मैप है वो मैप आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताएगा कि कहां पर कौन सा क्रॉप उगाया जाता है. सो दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट agricultural patterns is majorly related to the major crops that are cultivated in any region. Now, why these two maps are important for us? Because it is majorly on agriculture and mineral resources that the placement of industries depends. 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, शायद आप लोग जानते होंगे. ऐसे तो और भी टाइप की होती हैं, बट अभी हम 2 टाइप के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. एक होती है एग्रो बेस्ड, एक होती है मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड get their raw materials from agriculture. Example दो. और sugar सबसे important. The most important agro based industry is sugar industry and cotton textile industry. तुम लोग सीधा ऊपर पहुंचते हो, फूड प्रोसेसिंग. सीधा नीचे वाली इंडस्ट्रीज के बारे में भी तो बात करो. So food processing is definitely an example, but the 2 basic agro-based industries are cotton textile and sugar. Specifically ये दोनों industries इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. And then we have mineral-based industries, जिनके raw materials minerals से आते हैं. The major example of mineral-based industry is but obviously iron and steel industry. The most important industry or one of the most important industries iron and steel industry. तो जहां पर मिनरल्स मिलेंगे वहां पर हमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिलेंगी. जहां पर हमें कॉटन और शुगर केन जैसे क्रॉप्स मिलेंगे वहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी. जैसे इंडिया में देख लो ना, ये वाली बात तो आप सब जानते हो. सबसे ज्यादा शुगर केन का कल्टीवेशन कौन सी स्टेट में होता है? यूपी में. तो सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्री कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? यूपी में. सेकंड सबसे हाईएस्ट शुगर का प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है? महाराष्ट्र में. तो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट शुगर इंडस्ट्री कहां पर प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में. आयरन ओर हमारा बहुत ज्यादा कहां पर मिलता है? छोटा नागपुर में. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पर प्रेजेंट है? छोटा नागपुर. तो इसीलिए हमारे लिए मिनरल्स और एग्रीकल्चरल पैटर्न्स को पढ़ना जरूरी है, ताकि आगे हम ये भी देख सकें that what is the industrial patterns of that region. दो अभी हम इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये आपका आगे का डिस्कशन है, but here you will get the base as to how the industries are distributed in different parts of the world. And then we have the last thematic map. This last thematic map, guys, is related to climatic conditions. So climatic conditions से भी related एक मैप दिखेगा आपको, आप देखिएगा. You will see another map that will be related to climatic conditions.
where now climatic conditions are also important for us. Can anybody tell me why climatic conditions are important for us to study in geography? Climatic conditions हमें क्या बताती है? ओके, नेचुरल वेजिटेशन बताती है, नो डाउट, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताती हैं सबसे ज्यादा. सी, climate is one of the major factors that controls the type of crop that can be cultivated in an area. दो ही मेजर फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप टाइप्स को कंट्रोल करते हैं. वन इज सॉइल एंड द अदर वन इज क्लाइमेट. नाउ सी, प्लीज रिमेंबर, दिस विल हेल्प यू, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इसमें मैप्स में. Guys, when we are talking about climatic conditions, we majorly have two types of crops according to the required climatic conditions. One are tropical crops and the other one are temperate crops. Tropical crops are the crops that require warm and wet climatic conditions, and temperate crops are the crops that require relatively cool and drier climatic conditions. तो अब एक बात, सिंपल सी बात सोचो, गांठ मान लो. Guys, if we are talking about lower latitudes, the latitudes near the equator, तो यहां पर तो हमें पता ही है ना, जनरली वार्म एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. तो लोअर लैटिट्यूड्स में हमेशा कैसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाएगा? ट्रॉपिकल क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाएगा. If we are talking about relatively higher latitudes, say latitudes above 45 degrees, तो वहां पर तो जनरली कूल एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. तो वहां पर जनरली कैसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाएगा? टेम्परेट क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाएगा. सो डोंट रट्टोफाई कि यहां पर ये क्रॉप उगाया जाता है. यू नो, इन लोअर लैटिट्यूड्स वी विल हैव द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स एंड इन हायर लैटिट्यूड्स वी विल हैव द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट क्रॉप्स. अब लैटिट्यूड्स आते हैं बिटवीन 20 to 40 degrees. Now these are mid latitudes. यहां पर दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. जैसे हमारे यहां देखिए नॉर्दर्न इंडिया में वी हैव मेजरली टू क्रॉपिंग सीजन्स, द खरीफ सीजन एंड द राबी सीजन. खरीफ जो समर वाला सीजन है उसमें हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, और राबी जो विंटर वाला सीजन है उसमें हम टेम्परेट क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं. ट्रॉपिकल क्रॉप्स का मेजर एग्जांपल क्या है? राइस. राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल क्रॉप. राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपल फूड ऑफ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इसके अलावा शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं. जब हम टेम्परेट क्रॉप्स की बात करते हैं, then the major temperate crop of the world is but obviously wheat, the staple food of almost 20 to 25% of the global population. व्हीट के अलावा मस्टर्ड हो गया, पटेटोज हो गए, ये सारे के सारे भी टेम्परेट क्रॉप्स हैं. तो अब मैं आपसे कहूं कि मेक्सिको में एग्रीकल्चर हो रहा है, तो आप खुद मेक्सिको की लैटिट्यूडनल लोकेशन देखेंगे और रट्टा नहीं मारेंगे कि यहां पर कौन सा मेजर क्रॉप उगाया जाता है. आप खुद इस बात को समझ लेंगे कि यहां पर मेजरली ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाए जाते होंगे, क्योंकि ये 30 डिग्रीज लैटिट्यूड से थोड़ा सा नीचे ही पड़ता है. अब मैं आपसे कहूं यूएसए इज अ टेम्परेट जोन मोर और लेस. रट्टा मारा भी होगा बचपन में कि यूएसए में जनरली व्हीट का कल्टीवेशन होता है. अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रीजन समझो कि व्हीट का कल्टीवेशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जनरली कूल और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है. So in this manner you have to understand which crop is cultivated in which region. बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा, 20 डिग्रीज लैटिट्यूड्स पे सैग्रीगेट कीजिएगा. 0 to 20 डिग्रीज ट्रॉपिकल ही मिलेगा, 20 to 40 डिग्रीज समर में ट्रॉपिकल मिलेगा, विंटर में टेम्परेट मिलेगा, और 40 to 60 डिग्रीज जनरली टेम्परेट ही मिलेगा. 60 के ऊपर एग्रीकल्चर दिखता नहीं है ज्यादा. क्यों नहीं दिखता है ये भी आपको पता होना चाहिए. दीज आर दी बेसिक्स गाइस. वहां पर एक कंडीशन होती है जिसे हम पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं. व्हाट इज पर्माफ्रॉस्ट? सॉइल में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. गाइस 60 डिग्रीज लैटिट्यूड के ऊपर इतनी ठंड होती है कि वो मॉइस्चर फ्रीज कर जाता है. सो फ्रीजिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड एज पर्माफ्रॉस्ट. तो सॉइल में क्या बन जाते हैं? आइस के पार्टिकल्स बन जाते हैं,
इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इस वजह से 60 डिग्रीज के ऊपर जनरली हम लोगों को प्लांट्स की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है. सो 0 to 20 is tropical, 20 to 40 is both tropical and temperate, and 40 to 60 is temperate, and above 60 is permafrost. So are we good about it? अब ज्यादा रट्टा तो नहीं मारोगे, ध्यान से इसी बात को देख के एग्रीकल्चरल पैटर्न समझना. ओके, सो वन थिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट इज एग्रीकल्चर. व्हाट इज द अदर थिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट? हो गया नेचुरल वेजिटेशन. और एग्जैक्टली वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that is controlled by the climatic conditions is human population. एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, all organisms including humans prefer mild climatic conditions. या इसे इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, all organisms including humans अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. ना हमें बहुत ज्यादा गर्मी पसंद होती है, ना हमें बहुत ज्यादा ठंड पसंद होती है, हमें माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस पसंद होती है. इसलिए जहां पर माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, जैसे समझ लीजिए आजकल चल रही हैं, दीज कंडीशंस आर माइल्ड, वी आर टू हैप्पी इन दीज कंडीशंस. अभी 2 महीने बाद बहुत ठंड है करने लग जाएंगे, और फिर जून जुलाई में बहुत गर्मी है करने लग जाएंगे. बट अक्टूबर नवंबर और उधर जाके फरवरी मार्च आर दी कंडीशंस दैट वी लाइक इन नॉर्दर्न इंडिया. सो क्लाइमेट इज अ फैक्टर दैट आल्सो कंट्रोल्स population. Though please understand, this is also very important for you. Climate is not the major factor controlling population. तो आपको बहुत जगह ये ज्योग्राफी की बुक्स में लिखा हुआ दिखेगा कि क्लाइमेट जो है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट. कैन समबडी टेल मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ? The most important factor controlling population as of now is the presence of economic opportunities. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं होगी जहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी. क्यों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे सिटीज इतने ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड हैं? क्यों रूरल एरियाज इतने हेवीली पॉपुलेटेड नहीं हैं? द सिंपल रीजन इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. अभी एक बात सोचो, खुद सोचो प्रैक्टिकली. कोई आपसे कहे मैं आपको 10 लाख रुपए महीना देता हूं, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट में जाके रह लोगे? बिल्कुल रह लोगे. 10 लाख रुपए महीने के लिए तो 100% रह लोगे. दैट इज वेरी प्रैक्टिकल. So the most important factor that controls population as of now is the presence of economic opportunities. Population density will always be higher in regions where there are more economic opportunities and lesser in regions where there are less economic opportunities. And this is the major reason as to why the urban areas are very densely populated and the rural areas are not so densely populated. ठीक है, तो बाकी सेकेंडरी फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी फैक्टर जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है दैट इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. तो इसके बारे में खैर हम आगे भी अभी बात करेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा के बारे में. सो दीज आर द 4 मेजर थीमेटिक मैप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. हाँ, आपके एटलस में और भी मैप्स दे रखे होंगे. वेजिटेशन वाला मैप दे रखा होगा, लैंड यूज वाला मैप दे रखा होगा. दैट यू विल स्टडी लेटर व्हेन यू गो इनटू द मेन बैच. अभी वी विल बी फोकसिंग ओनली अपॉन 4 major thematic maps, that is population, minerals, agriculture and climatic conditions. So in all, in any continent, how many maps do we need to study? We need to study 6 maps. फिजिकल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और क्लाइमेट पढ़ेंगे. इन 6 मैप से आपको किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा. बाय द टाइम टुमारो वी कंप्लीट, निकल तो क्लास है नहीं, मंडे वी कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका, देन यू विल बी नोइंग मोर अबाउट नॉर्थ अमेरिका देन नॉर्थ अमेरिकन्स देमसेल्व्स. कुछ नॉर्थ अमेरिकन्स को भी उतना नहीं पता होगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में जितना आपको पता होगा.
मतलब एवरेज नॉर्थ अमेरिकन, स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो इतनी बात क्लियर है, स्पेशियल एनालिसिस क्या होता है, ये क्लियर है मैप्स क्या होते हैं, ये क्लियर है ज्योग्राफिकल एंटिटीज और ह्यूमन एंटिटीज क्या होती हैं, ये क्लियर है कितने टाइप के मेजरली मैप्स होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। फिजिकल बता रहे हैं ज्योग्राफिकल एंटिटीज के बारे में, पॉलिटिकल बता रहे हैं ह्यूमन एंटिटीज के बारे में, थीमेटिक बता रहे हैं एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कौन कौन सी 4 एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड क्लाइमेट। I will come to the fact why Bihar has very high population density। रुक जाओ, और भी फैक्टर्स होते हैं, तुम लोग जज्बाती हो जाते हो छोटी छोटी बात। एक तो कई बार तो स्टूडेंट्स ऐसे आके क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है कल बारिश होगी कि नहीं होगी? मैं उसको ऐसे देखता हूं, सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना इसलिए। मैंने कहा मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूं। कोई बात, ये भी बताऊंगा बिहार के बारे में, ठीक है, यूपी बिहार सबके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो नाउ गाइस कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका गाइस, firstly whenever we are talking about any continent, we need some basic information about that continent. Now, what is basic information? कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने कंट्रीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। So now when we're talking about North America, guys, North America is the 3rd largest continent by area, the 4th most populated continent. According to the UN data, it has 23 countries. So these are some basic things that you need to know about North America first. And then one more thing that you need to know is about the latitudinal location. Guys, the latitudinal location of North America is 7 degrees north to 85 degrees north. Completely present in the northern hemisphere. It stretches across the tropical region, the temperate region, the polar region, सारे के सारे regions नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट हैं। देखिए इक्वेटर से भी बहुत पास है और नॉर्थ पोल से भी काफी ज्यादा पास है। सो एरिया, पॉपुलेशन, कंट्रीज and latitudes, these will always be our basic information about any continent। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। Now guys, when we come to the maps, the first map that we will talk about is the easiest map that we have, and that will be the political map। Political map easiest होता है। पॉलिटिकल मैप आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इन पॉलिटिकल मैप वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर कंट्रीज एंड सिटीज। एक तो आपको सारे कंट्रीज याद नहीं रखने हैं, जो सिर्फ मेजर कंट्रीज हैं वो याद रखने हैं। अच्छा गाइस, मेजर कंट्रीज कौन से होते हैं, किस हिसाब से हम असर्टेन करते हैं कि कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है? 4 फैक्टर्स है जिसे हम कंसिडर करते हैं। पहली चीज एरिया एंड पॉपुलेशन, दूसरी चीज इकोनॉमी, एब्सोल्युटली। तीसरी चीज नॉट रियली, वो मिनरल वाला पार्ट इकोनॉमी में ही आ जाता है। अगर मिनरल में रिच होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी उस कंट्री की। नॉट रियली, मिलिट्री से हमें ज्योग्राफी में कुछ खास मतलब नहीं है, हम डिफेंस नहीं पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके पास ज्यादा एरिया और पॉपुलेशन भी नहीं होती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, being at the head of the Indian Ocean,
श्रीलंका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्री। एंड देन हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है जो अभी किसी भी रीजन की वजह से न्यूज में है। सो इफ इट इज अ कंट्री और अ प्लेस दैट इज इन न्यूज, वी नीड टू नो अबाउट दैट। तो हम लोग सिर्फ उन कंट्रीज को डिस्कस करेंगे जिन कंट्रीज में या तो बहुत ज्यादा एरिया और पॉपुलेशन है, या फिर बहुत अच्छी इकोनॉमी है, या फिर उनके पास कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिकली, और या फिर वो कंट्री हाल फिलहाल किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहा है। मेजर सिटीज कौन से होते हैं, सिटीज कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये हम लोग जनरली सिर्फ एक ही फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, एंड दैट इज पॉपुलेशन। The most populated cities are the major cities about which we need to talk. क्योंकि जिस सिटी में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस सिटी में उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, तो उसी वजह से उस सिटी की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो बेसिकली इट इज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, एंड बोथ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी इन द केस ऑफ द सिटी आर जनरली कोरिलेटेड। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो नाउ गाइस प्लीज ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का आउटलाइन मैप बनाइए प्लीज। So now when we are talking about the political map of North America, we come to North America political map. So now when we are drawing the outline map, थोड़ा टाइम लगेगा। आउटलाइन मैप्स आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं फिनेस से बनाने में, बट सून यू विल बी एबल टू ड्रॉ आउटलाइन मैप्स विद फिनेस। बस अभी इतना काम करना कि जो भी कॉन्टिनेंट बनाना, अगर नॉर्थ अमेरिका बना रहे हो तो वो नॉर्थ अमेरिका जैसा दिखना चाहिए, अदरक जैसा नहीं दिखना चाहिए। So guys, this is almost North America that we have. Now near North America we have certain important islands also, and remember in geography islands are very important for you. तो हम लोग ना political map में islands के बारे में भी बात करेंगे हमेशा। So we have a small island over here. We have a major island over here. We have another major island over here. We have a small island over here. Then we have a small island over here. And then we have many small islands that are present over here. Now guys, when we are talking about North America is majorly dominated by two countries. One is but obviously USA and the other one is Canada. So this is as you know the country of Canada. Why is Canada important? Guys, Canada is important since it is the second largest country by area. The second largest area is with Canada. Then we have, but obviously, the country of USA. Why is USA important? Third in area, third in population, and but obviously the biggest economy. चौथे पे कब हुआ बताया नहीं इसने मेरे को। ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बताते नहीं है मेरे को।
30 पे था लास्ट टाइम आई चेक्ड। कौन आ गया थर्ड पे? इंडोनेशिया थर्ड पे आ गया, बताया नहीं। इंडिया नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, चलो किसी चीज में तो हमने चाइना को हराया, और यूएसए नंबर 3 है, इंडोनेशिया नंबर 4 है, पाकिस्तान नंबर 5 है। टॉप 5 ही याद रखने हैं आपको। So guys, it is third in area, third in population, and the biggest economy. Now, another major country that we have in North America is Mexico. Mexico is also, you can say, a considerable economy. अच्छी खासी इकोनॉमी है मेक्सिको के पास, specifically with respect to agriculture. And Mexico has, you must be knowing about this, immigration issues with USA. इसके ना यूएसए के साथ इमिग्रेशन इश्यूज हैं बहुत सारे मैक्सिकन्स जो हैं वो इलीगली बाउंड्री क्रॉस करके यूएसए में एंटर कर जाते हैं, तो इसलिए ऑफ लेट मेक्सिको जो है वो न्यूज में रहता है। अब मेक्सिको के नीचे आप लोग देखेंगे, प्लीज लुक टू द साउथ ऑफ मेक्सिको, यू विल सी मेनी स्मॉल कंट्रीज, ग्वाटेमाला, पनामा, एल साल्वाडोर, ये सारे के सारे कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेजरली वी नीड टू टॉक टिल मेक्सिको। Now this region in the northwest, you people would be knowing, is the region of Alaska that belongs to USA. How many states are there in USA? 50 states. USA has 50 states. USA के जो फ्लैग है उसके ऊपर 50 स्टार्स हैं representing each state, और 13 stripes हैं representing the 13 original colonies that were there during the British rule. मुझे बचपन में ये बताया गया था कि इंडिया के भी अशोका चक्र पे इसलिए 24 स्पोक्स हैं क्योंकि इंडिया में 24 स्टेट्स हैं, स्टेट्स बढ़ती चली गई, स्पोक्स तो बढ़े नहीं, तो बेसिकली वो 24 स्पोक्स गलत बताया गया था। दे आर दी 24 आवर्स ऑफ द डे, इट इज द बुद्धिस्ट चक्र। तो इंडिया में ये सब चलता रहता है, हम अपने फ्लैग का अलग अलग ही इंटरप्रिटेशन निकालते रहते हैं। यूएसए में ऐसा नहीं होता, उनके 50 स्टार्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। अलास्का इज द 49th स्टेट, and then there is a small island that is present in the Pacific Ocean which is known as Hawaii. This is the 50th state of USA, और ये जो मेनलैंड है यहां पर 48 स्टेट्स हैं जो हमें यूएसए में देखने को मिलती हैं। So in all there are 48 states that are present on mainland USA. So guys, these are the major countries that are there on the mainland. Now when we are talking about the islands, this is guys the largest island of the world, which is Greenland. अब देखो, अगर आप लोग कहीं पर देखोगे ना लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, 13 stripes, because before the independence of USA there were 13 colonies that were there in USA. They are known as the 13 original colonies. जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो इन 13 कॉलोनीज के बारे में पढ़ेंगे। So now guys, I say that Greenland is the largest island in the world. It is when we are not considering Australia. Otherwise, Australia is the largest island in the world, but since Australia is a continent, we generally do not consider Australia as an island. So if we are not considering Australia, then Greenland is the largest island in the world. Greenland, as you people would be knowing, is a territory of Denmark. It belongs to Denmark. Now coming to the islands that we have. Now guys, this island that we have over here, a small island right next to the southeastern corner of USA, is the island of Bahamas. देखिए अपनी एटलस में बिल्कुल यूएसए के साउथ ईस्टर्न कॉर्नर पे आपको एक बहुत छोटा सा आइलैंड दिखेगा, दैट इज बहामास।
Then guys, this island, I hope everybody would be knowing about this island. This island is the island of Cuba. Now guys, after this, right next to Cuba, we have another island. मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं. This is Cuba, this is Bahamas. Now right next to Cuba, we have another island which is known as Hispaniola. So the name of the island is Hispaniola and this island consists of two countries. देखिएगा अपने एटलस में वेस्ट में आपको कंट्री दिखेगा जिसका नाम है हेटी और ईस्ट में आपको कंट्री दिखेगा जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक. So it is divided into two countries. We have Haiti to the west and Dominican Republic to the east. But the name of the island is Hispaniola. Beta 48 on the mainland, other two are Alaska and Hawaii. Alaska is the 49th state beta and Hawaii is the 50th state of USA. Okay. Now then we have another island. This is known as the island of Puerto Rico and Puerto Rico guys belongs to USA. हाँ स्टेटहुड मांगता है लेकिन देता नहीं है यूएस से बिल्कुल 100%. And then guys to the south of Cuba we have the island of Jamaica. This is Jamaica. Now these four islands, the larger ones, not Bahamas, but these four islands that is Cuba, Hispaniola, Puerto Rico and Jamaica are collectively known as the Greater Antilles. इन आइलैंड्स को गाइस हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेटर एंटिलेस. सो हाउ मेनी आइलैंड्स इन ग्रेटर एंटिलेस? 4 आइलैंड्स. क्यूबा है, हिस्पैनियोला है, पोर्टो रिको है और जमैका है. Now over here we have some smaller islands which are known as Lesser Antilles. Now Lesser Antilles has islands like Antigua है, Trinidad and Tobago है. These are the islands that are present in this region. Everybody who watches cricket must have heard about the term the West Indies. Guys, West Indies is Jamaica plus Lesser Antilles. So Lesser Antilles के जितने भी आइलैंड्स हैं और जमैका को मिला के जो रीजन है दैट रीजन इज नोन एज the West Indies. Who discovered West Indies? Yes, Christopher Columbus discovered West Indies. उसने इसका नाम वेस्ट इंडीज इसीलिए रख दिया था क्योंकि उसको लग रहा था वो इंडिया पहुंच गया. रेड इंडियंस बेटा मेजरली मेनलैंड पे होते हैं. दे आर मेजरली ऑन मेनलैंड, दे आर नॉट इन वेस्ट इंडीज. These are the islands that are surrounding North America. So please remember, when we are talking about the islands, firstly, to the northeast of North America, we have Greenland. सबसे पहले हमारे पास Greenland आता है. Apart from Greenland, guys, to the southeast of USA, we have many islands. We have Bahamas, we have Cuba, we have Hispaniola, we have Puerto Rico, we have Jamaica, and then we have many islands which are collectively known as Lesser Antilles. The island of Hispaniola is further divided into two countries. We have Haiti and Dominican Republic.
Puerto Rico belongs to US. Jamaica, Cuba, Hispaniola, and Puerto Rico in combined form are known as Greater Antilles. And when Jamaica is combined with Lesser Antilles, then this complete region is known as the West Indies. And then when we talk about the western side of the continent, towards the western side of the continent, we but obviously have the island of Hawaii, which is the 50th state of USA. So this is the first thing that we need to know about the political map of North America. 3 major countries है, Canada है, USA है, Mexico है. Then when we are talking about islands, Greenland है, Greater Antilles है, Lesser Antilles है और Hawaii है. Now guys, when we come to the cities, now when we talk about USA, in USA guys, the most important city is but obviously New York. So when we are talking about the cities, guys, in USA, the most important city is New York City. Guys, New York is among the only 2 cities in the world that have a GDP of more than $1 trillion. वर्ल्ड में सिर्फ 2 सिटीज हैं जिनकी जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है. सेकंड इज न्यूयॉर्क एंड फर्स्ट इज टोक्यो. टोक्यो के बारे में तो आगे बात करेंगे जब एशिया में आएंगे. सो टोक्यो एंड न्यूयॉर्क आर दी ओनली 2 सिटीज दैट हैव अ जीडीपी ऑफ मोर देन $1 ट्रिलियन. थर्ड नंबर पे जीडीपी में लॉस एंजलिस आता है. लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज अराउंड 980 बिलियन. तो शायद अब जब ये नेक्स्ट डेटा लेंगे तो लॉस एंजलिस की जीडीपी भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगी, बट अभी तो नहीं है ऑफिशियल डेटा के हिसाब से. नाउ आफ्टर न्यूयॉर्क द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूएसए इज लॉस एंजलिस. New York is the most populated city in USA. Los Angeles is the second most populated city of USA. Then the third most populated city of USA is Chicago. So Chicago is another important city that we have in USA. Then another important city that we have in USA is the city of San Francisco. San Francisco is another important city of USA and the fifth major city of USA, and these are cities that have some importance. अब ऐसे तो सियाटल भी इंपॉर्टेंट है, सैन डिएगो भी इंपॉर्टेंट है, पोर्टलैंड भी इंपॉर्टेंट है, बॉस्टन भी इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें इतने सिटीज के बारे में बात नहीं करनी है. ये वो सिटीज हैं जिनके पास कुछ बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस है. अनदर मेजर सिटी दैट वी हैव इन यूएसए इज द सिटी ऑफ मायामी. So these are the 5 most important cities that we have in USA. New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles and Miami. अभी बात करेंगे ये important क्यों है. Then guys, when we come to Canada, then the most populated city of Canada is the city of Toronto. Then guys, the second most populated city of Canada is the city of Montreal. Then on the western coast, we have the third most populated city of Canada known as Vancouver. And then in the central regions, we have an important city of Canada, which is also one of the major industrial centers.
known as Calgary. So these are the four most important cities of Canada: Toronto, Montreal, Vancouver, and Calgary. Now, when we talk about Mexico, in Mexico, we have only one major city, the capital of Mexico, known as Mexico City. So these are, guys, the 10 important cities that we have in North America. 5 यूएस में है, 4 कनाडा में है और 1 मेक्सिको में है. Now let us talk about the importance of these cities, why these cities are majorly important for us. Now guys, firstly, when we are talking about New York, जब हम न्यूयॉर्क के बारे में बात करते हैं, guys, why is New York important? New York is known as the financial capital of the world. न्यूयॉर्क को, गाइस, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं. न्यूयॉर्क हैज द बिगेस्ट stock exchange in the world, known as NYSE. New York Stock Exchange, the biggest stock exchange in the world, is present in New York, and due to this, it is the financial capital of the world. Similarly, when we are talking about Los Angeles, why Los Angeles is important? Guys, Los Angeles is the entertainment capital of the world. सारी कैपिटल तो यूएसए ही लेके बैठा है. So we have the entertainment capital of the world, which is Los Angeles, due to the presence of Hollywood. Then we have San Francisco. San Francisco, guys, is the IT capital of the world. वर्ल्ड की IT कैपिटल सैन फ्रांसिस्को है. When we talk about San Francisco, it is San Francisco that has the region known as the Silicon Valley. सैन फ्रांसिस्को जिस स्टेट में है उसका नाम है कैलिफोर्निया. गाइस, ऑल द मेजर IT कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन कैलिफोर्निया. Then, guys, we talk about Chicago. Chicago was previously called, अब तो नहीं बुलाया जाता है, but still it was previously called as the agricultural capital of the world. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो उसमें जब नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी, गाइस, शिकागो इज द लार्जेस्ट व्हीट एंड मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हीट मार्केट और मीट मार्केट दोनों शिकागो में है. ये रीजन है, अभी हम लोग बात करेंगे, यही वाला रीजन है जहां पर यूएसए का मेजर एग्रीकल्चर होता है और यहीं से जो कुछ भी प्रोड्यूस होती है उस सबको कलेक्ट करके टू सेल दैट प्रोड्यूस कहां ले जाया जाता है? शिकागो ले जाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज द लार्जेस्ट व्हीट एंड मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. देन व्हेन वी टॉक अबाउट मायामी, गाइस, मायामी इज मेजरली नोन फॉर इट्स टूरिज्म. वो मायामी वाला एरिया देखिएगा, यूएसए के साउथ ईस्ट में आपको एक छोटा सा पेनिनसुला दिखेगा.
जहां पर मियामी है, दैट इज गाइस द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. नाउ फ्लोरिडा इज टू यूएसए व्हाट गोवा इज टू इंडिया. इंडिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां जाता है? गोवा. यूएसए का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां जाता है? फ्लोरिडा. वही जो बीचेस, वार्म टेम्परेचर जो हम लोगों को गोवा में देखने को मिलता है, वही बीचेस, वही वार्म टेम्परेचर इन यूएस वालों को कहां देखने को मिलता है? फ्लोरिडा देखने को मिलता है. ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल टूरिज्म दैट टेक्स प्लेस इन यूएसए टेक्स प्लेस इन फ्लोरिडा. और फ्लोरिडा में भी मेजर सिटी कौन सा है टूरिज्म के लिए? मायामी. मायामी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी फॉर टूरिज्म इन यूएसए. So these are the 5 most important cities of USA. इसे tourism capital of the world नहीं कहते. Which is the tourism capital of the world? Which city received the largest number of tourists in the world? Paris. Paris is the city that receives the highest number of tourists in the world, and France is the country that receives the highest number of international tourists in the world. बेटा सैन फ्रांसिस्को के बारे में मैंने ये बोला that San Francisco is the IT capital of the world. एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहां पे सारी की सारी आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं. That Silicon Valley is present in San Francisco. और मैंने ये बोला कि सिलिकॉन वैली या सैन फ्रांसिस्को जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम कैलिफोर्निया है. And whatever company you know about, whatever major IT company you know about, Google, Apple, etc., all these major IT companies have their headquarters in California. So this is what I said about San Francisco. So are we good about the major cities of USA? Remember, USA में population भी याद रखिएगा. नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पे लॉस एंजलिस है और नंबर 3 पे शिकागो. These are the 3 most populated cities that we have in USA. So now guys, let us move to Canada. Now Canada has an interesting aspect that we need to know. Guys, in Canada the 2 most important cities are Toronto and Montreal. But the capital of Canada is a city known as Ottawa, right? अब गाइस ऐसा हमें बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा. देयर विल बी 2 मेजर सिटीज. वन सिटी विल बी द कमर्शियल कैपिटल एंड द अदर सिटी विल बी द कल्चरल कैपिटल. एक सिटी ऐसा होगा जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इनहैंस्ड होंगी और एक सिटी ऐसा होगा जहां पर कल्चर बहुत ज्यादा इनहैंस्ड होगा. जनरली क्या होता है? जनरली इन दोनों सिटीज में एक कंपटीशन रहता है टू बिकम द कैपिटल ऑफ द कंट्री. और जनरली गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अगर 2 सिटीज में कंपटीशन है तो वो इन दोनों में से किसी सिटी को जो है वो कैपिटल नहीं बनाती है और एक थर्ड छोटे से सिटी को, इनसिग्निफिकेंट सिटी को कैपिटल बना देती है. और वही काम कहां पर हुआ है? वही काम कनाडा में हुआ है. बेसिकली इन कनाडा टोरंटो इज द कमर्शियल कैपिटल एंड मॉन्ट्रियल इज द कल्चरल कैपिटल. So there was always a competition between Montreal and Toronto कि which one of them will become the capital. तो उन्होंने इस competition को ही खत्म कर दिया, उन्होंने ओटावा को कैपिटल बना दिया. Same happened in Australia also. In Australia, Sydney is the commercial capital and Melbourne is the cultural capital. तो वहां पर भी एक कंपटीशन था कि सिडनी कैपिटल बनेगी या मेलबर्न कैपिटल बनेगा और इसीलिए उन्होंने एक छोटे से सिटी कैनबरा को कैपिटल बना दिया. तो ऐसा हमें कई जगह पर देखने को मिलता है that neither the commercial capital nor the cultural capital become the political capital. A third city becomes the political capital. Most important examples are Canada and Australia. अब एक बात और सोचिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कीजिए, अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इंक्लिनेशन लीजिए. Now guys, there are cities where commercial capital has been made the political capital and there are cities where the cultural capital has been made as the political capital. Now, कौन से सिटीज ने कमर्शियल कैपिटल को पॉलिटिकल कैपिटल बनाया है और कौन से सिटीज ने कल्चरल कैपिटल को पॉलिटिकल कैपिटल बनाया है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ थिंक अबाउट इट दैट व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल. इफ द पीपल आर हाईली कैपिटलिस्ट,
and they are too much involved into economic activities, then but obviously जो commercial capital है उसी को political capital बनाया जाएगा. For example, जापान में टोक्यो commercial capital है, वही political capital. But there are certain countries in which people are not so much concerned about money, but are more concerned about their culture and tradition. In such countries, the commercial capital is not the political capital, the cultural capital is the political capital. For example, India. दिल्ली कल्चरल कैपिटल है, पूरा का पूरा मुगल कल्चर ही यहां का है और इसीलिए यही पॉलिटिकल कैपिटल है. चाइना में कमर्शियल कैपिटल शंघाई है, बीजिंग कल्चरल कैपिटल है और वहां पर भी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कल्चरल कैपिटल ही है. तो कमर्शियल कैपिटल बनाई गई या कल्चरल कैपिटल बनाई गई, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है वेदर पीपल आर कैपिटलिस्ट और पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कल्चर एंड ट्रेडिशन. अब यूरोप के कंट्रीज में ये पंगा ही नहीं है. वहां पर जो कल्चरल कैपिटल है वही कमर्शियल कैपिटल भी है और वही पॉलिटिकल कैपिटल भी है. इंग्लैंड का लंदन, फ्रांस का पेरिस, इटली का रोम, all these are both the commercial capital as well as the cultural capital, and that is why they had no choice but they had to choose that city only as the political capital. यूरोप में एक और फैक्टर भी है जिसने कैपिटल के पोजीशन को या कैपिटल को इन्फ्लुएंस किया है, एंड दैट इज द लोकेशन ऑफ द कैपिटल. आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि मेडिवल टाइम्स में यूरोप हैड अ वेरी वायलेंट हिस्ट्री. हर समय लड़ते ही रहती थी यूरोपियन कंट्रीज. सो दैट इज व्हाई इफ यू विल सी द मैप ऑफ यूरोप, जब यूरोप पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. इफ यू विल सी द मैप ऑफ यूरोप, ऑल द कैपिटल्स इन यूरोप आर वेरी मच सेंट्रली लोकेटेड. क्योंकि भाई कहीं पर भी अटैक होगा बॉर्डर से तो सबसे ज्यादा टाइम कहां तक पहुंचने में लगेगा, सेंटर तक पहुंचने में लगेगा. इसीलिए उन्होंने कैपिटल्स को थोड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड भी रखा है. बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है. तो प्लीज रिमेंबर, इफ द कंट्री इज हैविंग कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज, then the commercial capital will become the political capital. If the country is having traditional tendencies, then the cultural capital will become the political capital. In certain countries like Canada and Australia, a third capital, an insignificant city, has been chosen as the capital, and in Europe, it is the same city which is both the commercial as well as the cultural capital. So there was no other choice of choosing the political capital. अभी आप लोगों को सर ने बताया होगा, ज्योग्राफी में आप लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. उसमें आपको यह पढ़ना है कि किस तरीके से कैपिटल चूज की जाती है. तो उसी के बारे में मैंने आपको अभी एक इंट्रोडक्शन दिया है, दैट हाउ एक्चुअली द कैपिटल इज चोजन. ओके, सो नाउ कमिंग टू कैनेडा. नाउ इन कैनेडा द फर्स्ट मेजर सिटी दैट वी हैव इज द सिटी ऑफ टोरंटो. जो पहला मेजर सिटी हमारे पास आता है कनाडा में, दैट इज टोरंटो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टोरंटो, guys, Toronto is basically the IT capital of Canada. मेजरली जो आईटी कंपनीज हैं, वो आईटी कंपनीज कहां पर बेस्ड हैं? टोरंटो में बेस्ड हैं. देन वी हैव मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कैनेडा. अच्छा, एक बात जिसकी हमें ना बार बार जरूरत पड़ेगी, तो वो हम अभी डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा. मैं इस स्लाइड पे आता हूं. मैं एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड, जरा ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूं. गाइस, यू पीपल नो अबाउट इकोनॉमिक सेक्टर्स ना? हाउ मेनी इकोनॉमिक सेक्टर्स? 5. 3 होते थे 1960 में. प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वार्टनरी होता है और क्यूनरी होता है. So 5 economic sectors. So all economic activities are divided into 5 different sectors. That is primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. Okay, what is primary sector?
agriculture is the example of primary sector. I'm asking you the definition of primary sector. The primary sector consists of economic activities which are related with natural resources. These economic activities are, guys, impossible without natural resources. Like for example, agriculture. Guys, can you do agriculture without land and water? Land and water के बिना agriculture possible है? नहीं है. तो agriculture किसके ऊपर डिपेंड करता है? Natural resources के ऊपर डिपेंड करता है. Exactly. Then we have mining. Is mining possible without land? Not at all. Then we have hunting and fishing. Then we have lumbering, that is wood cutting. So all these activities are dependent upon natural resources, the resources that are provided by nature, and all these activities come into the primary sector. What is secondary sector? हाँ बेटा, मिनरल्स हो गया ना, माइनिंग. Okay, secondary sector only manufacturing. There are two types of industries that we have. We have processing industry and we have manufacturing industry. What is the difference between processing and manufacturing? Using our ideas to make some new products is called manufacturing. Okay, makes sense. They have been value added, some kind of value added. Refining of the things. Yes, yes, yes. Processing is majorly related with purification. So what happens is, प्राइमरी सेक्टर से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं which cannot be directly used by humans. We need to first purify those things. So the process of purification is done by which industry? It is done by the processing industry. जैसे माइनिंग से हमें पेट्रोलियम मिलता है, बट क्या हम पेट्रोलियम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें उसमें से पेट्रोल बनाना पड़ता है, डीजल बनाना पड़ता है. तो ये जो पेट्रोल और डीजल बनाने का काम है, ये कौन सी इंडस्ट्री करती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री करती है. सो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग. हमें माइनिंग के थ्रू मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मिलता है. क्या हम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं, उसे हमें स्टील में कन्वर्ट करना पड़ता है. हम उसे स्टील में कन्वर्ट करते हैं. स्टील को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. स्टील बनाने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करती है. सो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो व्हाट डू प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डू? जो भी चीज हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती है, उस चीज को फर्दर प्यूरिफाई कर देती हैं फॉर ह्यूमन use. Manufacturing, as somebody said, is making of new products. I can rephrase it as manufacturing is the process of giving desired shape and size. हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? किसी भी एंटिटी को एक डिजायर्ड शेप और साइज दे देते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. देयर आर 2-3 एग्जांपल्स. From primary sector, we can get iron ore, we can get cotton. But can we use iron ore and cotton directly? No. So from processing, we get steel and we get textiles. प्रोसेसिंग क्या करता है? आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर देता है और कॉटन को किस में कन्वर्ट कर देता है? टेक्सटाइल्स में कन्वर्ट कर देता है. नाउ इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डू वी गेट? स्टील इज कन्वर्टेड टू ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल्स आर कन्वर्टेड टू गारमेंट. तो यहां पर सिर्फ क्या किया गया है? क्या एक स्टील को डिजायर्ड शेप और साइज नहीं दिया गया है? यहां पर क्या टेक्सटाइल्स को एक डिजायर्ड शेप और साइज नहीं दिया गया है? तो
तो जो डिजायर्ड शेप और साइज देने वाला काम करती है, ये कौन सी इंडस्ट्री करती है? मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपने रॉ मटेरियल्स मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर से, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने रॉ मटेरियल्स मिलते हैं फ्रॉम दी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये आगे हमारे लिए यूजफुल है, आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में काम में आएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ा होगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे रिक्वायर अ ह्यूज एरिया, and they employ a large number of people. Whereas manufacturing can be both small and large scale, not and or. ये small scale भी हो सकती है, large scale भी हो सकती है। हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझना? Because it is the processing industry that provides more employment. सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे आप लोग जानते होंगे, इन इंडिया वी हैव अ वेरी मेजर सिटी नोन एज जमशेदपुर। नाउ इन जमशेदपुर गाइस 76% ऑफ द वर्कफोर्स वर्क्स इन टिस्को। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे शहर को एम्प्लॉयमेंट किसने दे रखा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने दे रखा है। तो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स लेसर एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी के लिए कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है। बट आप लोग जानते हैं, जो चीज इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है वो एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब प्रोसेसिंग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है तो प्रोसेसिंग ही ज्यादा क्या करती है? पोल्यूशन भी करती है। More pollution is done by the processing industry and lesser pollution is done by the manufacturing industry. तो पहले तो ये समझिए, देखिए यहां पे तीन बातें, there are three things that you need to understand. First, understand what is the difference between processing industry and manufacturing industry. Processing is purifying and manufacturing is giving desired shape and size. Are we all good with this? The next thing that you need to understand is which one is more important for economy and which one is more, you can say, hazardous for the environment. So both इकोनॉमी के लिए भी ज्यादा अच्छी और एनवायरमेंट के लिए भी ज्यादा हजार्डस कौन सी होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। तो दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी हो गया, ये टोटल मिला के कौन सा सेक्टर हो जाता है? ये सेकेंडरी हो जाता है। नाउ वी कम टू टर्शरी एंड क्वाटरनरी। नाउ यू पीपल मस्ट बी नोइंग टर्शरी एंड क्वाटरनरी इन कंबाइंड फॉर्म आर नोन एज द सर्विस सेक्टर। इन दोनों को मिला के हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड क्वाटरनरी? टर्शरी और क्वाटरनरी में डिफरेंस क्या होता है? टर्शरी इज द सेक्टर ऑफ नॉन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड क्वाटरनरी इज द सेक्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सी, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, ध्यान से सोचिएगा, जिन सर्विसेज को देने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आपके घर में ड्राइवर होगा, गार्डनर होगा, मैन सर्वेंट होगा, मेड्स होंगी, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ये तो नहीं कहते हो ना कि मैं ड्राइवर उसी को रखूंगा जिसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी होगी, या ये तो नहीं कहते हो ना मैं गार्डनर उसी को रखूंगा जिसने बॉटनी में एमएससी कर रखी होगी। नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम क्वालिफिकेशंस and they are providing you with services. Such services which do not require any minimum qualification are known as non-specialized services, and these non-specialized services come in the tertiary sector. For example, shopkeeper. शॉपकीपर भी आपको सर्विस दे रहा है ना, कहीं से सामान लेके आपको बेच रहा है, लेकिन क्या शॉपकीपर बनने के लिए आपको किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं है। तो दैट इज व्हाट टर्शरी सेक्टर इज। क्वाटरनरी इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जहां पर सर्विस देने के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। अब डॉक्टर आपको सर्विस देता है, हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, उसको मिनिमम एमबीबीएस तो होना पड़ेगा ना। इंजीनियर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देता है, उसको मिनिमम बीटेक होना पड़ेगा ना। लॉयर लीगल सर्विसेज देता है, उसको मिनिमम एलएलबी होना पड़ेगा ना। तो ऐसी सर्विसेज जिसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है,
those services are in the quaternary sector. So please understand what is the difference between tertiary and quaternary. Tertiary is non-specialized services and quaternary is specialized services. Gardener, driver, shopkeeper, ये सब tertiary में आ जाएंगे. Engineer, doctor, lawyer, architect, ये सब जो हैं वो quaternary में आ जाएंगे. So are we good about tertiary and quaternary? Last and the highest sector is the quinary sector. Now what is the quinary sector? बहुत ज्यादा मैंने देखा कंफ्यूजन होता है क्यूनरी सेक्टर को लेके कि इसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं. बच्चे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स देते हैं. गाइस जस्ट रिमेंबर अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. क्यूनरी सेक्टर इज द सेक्टर इन विच द वर्क और डिसीजन कैन इम्पैक्ट millions of lives. Guys, क्यूनरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं जिनके काम से या जिनके डिसीजन से मिलियंस ऑफ लाइव्स इंपैक्ट्स हो सकती हैं. So the people whose work or whose decisions can impact millions of lives, such people are working in the quinary sector. For example, research and development. Now say the people who are working in R&D of healthcare, कल अगर वो लोग कैंसर की दवाई निकाल लेते हैं या एड्स की दवाई निकाल लेते हैं तो क्या मिलियंस ऑफ लाइफ्स इंपैक्ट नहीं हो जाएंगी? So first, the people who are working in research and development, their work can impact millions of lives. And then there are very powerful people whose decision can impact millions of lives. जैसे समझ लो अभी मार्क जकरबर्ग साहब कहते हैं आज से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों बंद. मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाएंगी उनके एक डिसीजन से. So he has the power to impact millions of life. हमारे प्यारे मोदी साहब आ जाते हैं रात को 8 बजे, कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, और फिर कुछ कह के चले जाते हैं और उससे बिलियंस ऑफ लाइफ्स इफेक्ट हो जाती हैं. तो अगेन ही ऑल्सो हैज द पावर टू अफेक्ट बिलियंस ऑफ लाइफ्स. सो टॉप एंटरप्रेन्योर्स, टॉप पॉलिटिशियंस, जिनके पास इतनी पावर है कि उनका एक डिसीजन मिलियंस ऑफ लाइफ्स को बदल सकता है, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द क्यूनरी सेक्टर. So the people who have the ability to influence millions of lives work in the quinary sector. अभी मैं 4-5 दिन पहले कहीं क्लास ले रहा था, वहां पर एक स्टूडेंट ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट अबाउट these influencers that are coming nowadays? They can also influence millions of people. Yes, they can. And that is why if an influencer has the ability of influencing millions of people, then that person will also come in which sector? He will also come in a क्यूनरी सेक्टर. जैसे ये हो गए ना अपने ये जो टॉप एक्टर्स, टॉप क्रिकेटर्स वगैरह हैं, ये भी तो मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये एक चीज जिस भी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो लाखों लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो ये लोग भी कौन से सेक्टर में आएंगे? ये लोग भी क्यूनरी सेक्टर में आएंगे. Now somebody is asking IAS officers, what do you think about IAS officers? See, IAS officers at a lower level will come in the quaternary sector, but at a higher level, when you will become the secretary, the home secretary, the cabinet secretary, तब आप बैठ के इंडिया की सारी पॉलिसीज बनाओगे. तब आपके पास भी इतनी पावर होगी कि आप बिलियंस ऑफ लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर सकोगे. तब आप कौन से सेक्टर में पहुंच जाओगे? क्यूनरी सेक्टर में पहुंच जाओगे. सो इफ यू आर एट अ रैंक वेयर यू आर ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स, देन यू आर इन द क्वाटरनरी सेक्टर. बट इफ यू आर एट अ रैंक व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस, देन यू आर इन द क्यूनरी सेक्टर. तो जब तक एसडीएम रहोगे, डेप्यूटी कलेक्टर रहोगे, तब तक क्वाटरनरी सेक्टर में रहोगे. लेकिन जब कलेक्टर बन जाओगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना आपको, और जितने भी लोग हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों की लाइफ को आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे ना, तब आप कौन से सेक्टर में पहुंच जाओगे? क्यूनरी सेक्टर में पहुंच जाओगे. सो इट इज डिबेटेबल.
whether it is quaternary or quinary. So at lower levels it is quaternary and at higher levels it becomes quinary. तो देखो कॉन्सेप्ट याद रखो तो खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा जो प्रोफेशन है वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा. So this is what we need to understand about the economic sector. So are we good about the economic sectors? Primary, बस इतनी सी बात याद रखना. Primary, natural resources. Secondary, industries. Tertiary, non-specialized services. Quaternary, specialized services. Quinary, influence. बस एक एक वर्ड याद रखते रहना, बस इतना बहुत है आपके लिए. You will remember all the economic sectors. Now, when we talk about the quaternary sector as of now, in quaternary sector, the two biggest services that we are having in the world at present are information technology and finance. तो generally आप लोग ये देखेंगे, like just now we were discussing about Toronto and Montreal. That is why we came to this discussion. Toronto was all about information technology and Montreal was all about finance. So generally when we are seeing the major cities of the world, यही दोनों services हैं जो services हमें generally देखने को मिलेंगी across the major cities of the world. जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, so Mumbai is all about finance. हम मंगलुरु की बात करते हैं, मंगलुरु is all about IT. So majorly it is, these are the only two services that we will see in the major cities of the world. There is one more service which is also picking up very fast, and that service is real estate, construction. तो बहुत सारे ऐसे भी cities होंगे जहां पे आपको real estate services बहुत ज्यादा boom करती हुई दिखेंगी. So these are the only three services that we will see in the major cities of the world. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है. रियल एस्टेट धीरे धीरे करके पिकअप कर रही है. भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने की जगह तो चाहिए, तो इसके रियल एस्टेट सर्विसेज आर ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड. ओके, सो रिटर्निंग टू आवर डिस्कशन अबाउट नॉर्थ अमेरिका. So Toronto is the IT capital of Canada. Montreal is the financial capital of Canada. When we are talking about Vancouver, Vancouver is majorly important, number one for tourism. Tourism takes place in Vancouver. Vancouver is a beautiful place. And then Vancouver is also a major port of Canada. So when we are talking about Vancouver, the two major economic activities that are happening in Vancouver are tourism and port activities. Now also remember one very important thing. Tourism is also one of the fastest growing industries of the world. So tourism industry is picking up at a very rapid pace. Guys, the tourism industry is one of the fastest growing industries of the world. टूरिज्म आप लोग समझ सकते हो बहुत सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट करता है. जहां पर टूरिज्म होगा वहां पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे. वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी. अब टूरिस्ट जाएगा तो सामान खरीदेगा, तो वहां पे बहुत सारी दुकानें वगैरह होती हैं. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इंपैक्ट होगा. टूरिस्ट जाएगा, घूमेगा तो उसे गाड़ी चाहिए. तो मेनी सेक्टर्स आर इंपैक्टेड बाय टूरिज्म. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंपैक्ट होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज इंपैक्ट होती हैं, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी इंपैक्ट होता है बाय टूरिज्म. Now when we talk about Calgary, guys, Calgary is the major industrial center with iron and steel and cotton textile industry. So Calgary is more about industries, it is more about the secondary sector. It is not about the service sector or the tourism sector. It is more about the secondary sector. Iron and steel industry and cotton textile industries are present in Calgary. So Toronto IT है,
मॉन्ट्रियल फिनेंस है, कैलगरी इंडस्ट्रीज है, वैंकूवर टूरिज्म है और मेजर पोर्ट है. So these are the major commercial activities that are taking place in the major cities of Canada. Now, when we talk about Canada, please remember the most populated city is Toronto, the second most populated is Montreal, and the third most populated is Vancouver. यूएसए में न्यूयॉर्क, एलए और शिकागो थे, यहां पर टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर है. Now guys, we come to our last major city, that is the Mexico City. Now when we talk about the Mexico City, guys, Mexico City, please remember, is the most populated city of North America. तो हमें कॉन्टिनेंट में भी कौन सा सबसे पॉपुलेटेड सिटी है ये पता होना चाहिए. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेक्सिको सिटी, इट इज द मोस्ट populated city of North America. There was a time, say 20 years ago, when Mexico City was the most populated city of the world. अब नहीं है, but नॉर्थ अमेरिका का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है. वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? टोक्यो. टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड. Now, when we talk about Mexico City is also an industrial center. ये भी एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. यहां पर भी सेकेंडरी सेक्टर है. When we talk about Mexico City has cotton textiles. Mexico City has electronics, and Mexico City also has food processing, because Mexico is a very important country. We will be discussing with respect to agriculture. That is why the food processing industry is also present in the Mexico City. So these are the major cities and their major economic activities that we have in North America. तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर कंट्रीज हैं. फिर हमें यह समझना है कि कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका में. Then we need to understand that which are the major cities of North America. And then we need to understand that what are the major economic activities of North American cities. Now guys, one important thing I forgot to tell it to you earlier. Now when we talk about these 3 important countries, that is Canada, USA and Mexico, you can see I have drawn the international boundaries between Canada and US and between US and Mexico. अब कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. यू शुड बी नोइंग सर्टेन थिंग्स अबाउट सर्टेन इंटरनेशनल बाउंड्रीज. मेनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जैसे आपने इंडिया के केस में भी सुना होगा, रैटक्लिफ लाइक, मैकमोहन लाइन एक्सेट्रा, इनके नाम होते हैं. तो यहां पर गाइस जो कनाडा और यूएसए की इंटरनेशनल बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड एज द 49th पैरेलल. इसे हम 49th पैरेलल कहते हैं. Now, why it is called as the 49th parallel? You can see in your map, it is almost a straight line, and it majorly overlaps with the 49 degrees north latitude. ये 49 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ ओवरलैप करती है, ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, इट इज कॉल्ड एज द 49th parallel. You must be knowing, since latitudes are parallel to each other, they are also known as parallels, and since it is intersecting with 49 degrees north, hence it is known as the 49th parallel. Now the international boundary between USA and Mexico is known as the Rio Grande boundary. इसे गाइस हम लोग
रियो ग्रांड बाउंड्री कहते हैं। Now why is it known as the Rio Grande boundary? If you will see in your physical map, देखिएगा एक बार प्लीज फिजिकल मैप में। यस, सो यूएसए के ना साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में, डायरेक्शंस तो जानते हो ना, साउथ वेस्ट कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है, गुड। वहां पर आपको एक प्लेटो दिखेगा जिसका नाम है कोलोराडो प्लेटो, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में, मतलब फिजिकल मैप में। वहां से आपको ईस्ट की तरफ एक रिवर ओरिजिनेट करती हुई दिखेगी विच इज रिवर रियो ग्रैंड, and you will see that Rio Grande will flow into Mexico. It is the most important river of Mexico, and almost the international boundary of USA and Mexico will be intersecting with river Rio Grande. ये रिवर रियो ग्रैंड के साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी, इसीलिए गाइस इस बाउंड्री का नाम क्या रख दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज द रियो ग्रैंड बाउंड्री। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा that Ural Mountains is the natural boundary between Asia and Europe. Similarly, Rio Grande is the natural boundary between USA and Mexico. Rio Grande एक तरीके से natural boundary है USA और Mexico के बीच। So this is what we need to understand when we are talking about the political map of North America. So are we good about political map of North America? बात समझ में आई? कौन कौन से मेजर कंट्रीज हैं, कौन कौन से मेजर सिटीज हैं, उनमें क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गुड फॉर यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ वन लास्ट थिंग व्हिच यू शुड नो, अगेन इट इज रिलेटेड बिकॉज विद पॉलिटिकल ज्योग्राफी। Guys, if I show you the state map of USA, okay, I needed the internet, I needed actually the Google Chrome, but क्योंकि स्कैनर ऑन है और ये स्कैनर वापस नहीं जा रहा है, स्कैनर ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको स्टेट मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वरना फिर हमें कल स्टेट मैप देखना पड़ेगा, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास है। चलो लेट इट बी, वी विल सी द स्टेट मैप इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए प्लीज कहानी यहां तक समझिए। एक छोटा सा स्टेट्स का डिस्कशन हमारा बचा है, बिकॉज आई वांट टू नो यू certain things about the states also. So we will talk about that in the next class. So in the next class we will complete our discussion about states and then we will start talking about the physical map and the other maps of North America. Okay guys, I think we have our next class on Monday. So okay, now we meet on Monday. Thank you so much, and if you have any doubts related to anything, then you can contact me, you can WhatsApp me. This is my WhatsApp number if you want. So you can contact me on WhatsApp. You know my name? So if you have any doubts, you can contact me on WhatsApp. But WhatsApp के बाद एक बात याद रखना बस बेटा, थोड़ा सा सब्र रखना। एक एक दिन में 40-40, 50-50 मैसेजेस आते हैं,
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता हूँ, तो एकदम से रिप्लाई नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा रिप्लाई मिलने में, लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं बेटा, नो क्लास ऑन सैटरडे। आपकी क्लासेस मेरे ख्याल से आपको शेड्यूल मिल गया होगा। यू विल बी हैविंग क्लासेस 4 days a week, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Okay, so I am telling you, don't worry, you will get the schedule. Please ask about the schedule on the Telegram group. So you are having classes on Monday, Tuesday, Thursday, Friday. ठीक है, ये schedule में है ना आपके पास? We are not having classes on Wednesday, Saturday and Sundays. Okay, so 4 days a week we are having the class as of now. बाद में बढ़ा के 5 करनी होगी तो कर देंगे, अभी तो 4 दिन ही है, इतना बहुत, इससे ज्यादा परेशान थोड़ी करूंगा मैं आपको। पहले ही पिछले 1.5 घंटे से परेशान कर रहा था, अब इससे ज्यादा और क्या ही परेशान करूंगा। ओके गाइस, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, मैं बोलना भूल गया, रुक जाओ, कुछ आया था, लव लेटर। हाँ, वो बेटा 2:30 पे करंट अफेयर्स की क्लास है, तो जिनको अटेंड करनी है, हाँ, द पीपल हु वांट टू अटेंड द करंट अफेयर्स क्लास, इट विल हैपन इन दिस क्लासरूम ओनली, नहीं, हाँ, इट विल हैपन इन दिस क्लासरूम ओनली, यस, एंड दैट इज एट 2:30, so you people can also attend if you want to. So the weekly current affairs class is at 2:30, 20 मिनट का टाइम है, खाना पीना खा लो, फिर 2:30 बजे से दूसरी क्लास अटेंड करने बैठ जाना, फिर वो क्लास खत्म होगी, फिर खाना पीना खा लेना 15 मिनट में, फिर तीसरी क्लास अटेंड करने बैठ जाना। देखो यही होता है यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में, और तो कुछ होता नहीं है ना। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 6 क्लास अटेंड करोगे, तभी तो जाके फिर आईएएस बनोगे, वरना ऐसे थोड़ी आईएएस बन जाओगे। 6 क्लास अटेंड करनी है रोज, 10 घंटे खुद पढ़ना है, बाकी देख लो जो कुछ भी टाइम बचता है 15-20 मिनट का, उसमें सो वो लेना। दैट इज मोर देन गुड इनफ फॉर यू पीपल, राइट? ओके गाइस, थैंक यू।